Hi, so welcome to the strategic session for medieval India. In this session, I'll be discussing about the trend of last 5 to 6 years of UPSC history optional from medieval India point of view. Then I'll be specifically discussing which topic you should prepare very dearly and how you can use answer writing or you can use various kinds of test series to get a very good rank in civil services. Let us start very quickly. Okay, so the session will be about trends, topics of BYQs, training yourself for the same. Last would be about testing phase. Testing phase is very, very important. If you're not doing daily answer writing or if you're already at a basic level, how to reach to the advanced level, the testing part becomes very, very important, and how to use this learning to get a good rank or at least initially good marks in paper one. Let us discuss all of them. Please remember these observations or at least make a note of them so that when you will start studying, even if you're at a basic level or even if you're at an advanced level, this is going to help you out with this. Okay, so number one, large numbers of questions are being asked from early medieval period. This early medieval period, it's a kind of transition period from ancient India to medieval India. In this, we have various themes about political decentralization, themes we have with respect to the economic setup or the phases of urbanization. We have a specific theme about the change in the social structure of Indian society. So that's why large number of questions are coming from here. And thereafter, just a corollary of the first theme itself, it's about feudalism. Feudalism, UPSC is asking questions with respect to the historians who have applied this feudalistic theory of Europe on India. Second, questions are also being asked with respect to land grant because in India, the system of feudalism is mostly based upon the theories of land grants. So this, even though it belongs to early medieval period, I want to highlight it in front of you because every year 2 to 3 questions are coming from early medieval period. One of the question comes from feudalism and the rest comes from the other themes from polity, economy, society. So this is how you have to prepare yourself. Third, very, very important observation. For few years, okay, from 2017 onwards, UPSC was not asking questions from sources from medieval India. But from last 2 years, 22, 23, questions are coming on sources one more time. We can talk about Al-Baruni, we can talk about Kalhana's Rajatarangani. So large number of questions are again coming from sources. So you have to prepare it very well. Look, every few years the trend is going to change. Like in 2017-18, UPSC started asking questions about agriculture. But agriculture theme is now completely covered. Very few questions are left from there. That's why this theme is coming back. So that's why you have to remember it. Literature as well as art and architecture and paintings of Mughals. This remains very important. Literature from early medieval period, Sultanate and even Mughal point of views. Literature you have to prepare very well. This art and culture part is always going to help you in scoring highest in this part of medieval India. Then, if we see the initial part of the syllabus after early medieval period, questions are coming on the defeat of Rajputs, Sultanate economy, as well as estimate of Alauddin Khilji. Alauddin Khilji remains one of the most important personality in medieval India, and every second, third year you will see a question on this. So this remains one of the most important topic. Policies of other sultans like Balban, Iltutmish are also being asked from time to time. So make sure the important personality from Delhi Sultanate are covered very well by you. Okay, next, Vijayanagar. Vijayanagar remains an important theme from South India. Just like in ancient India, we discussed that UPSC asking question from either megalithic, Sangam age or from the Chola. तीन में से एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, लगभग आना ही आना है. यहाँ पे अगर हम देखें तो they are going to ask question from either Vijayanagar or later from the Marathas. So Vijayanagar remains a very important theme. All the aspects of Vijayanagar, the foundation, what kind of debate that we have with respect to that, the question with respect to their art and architecture, the relationship with Bahmani Sultanate, all of this is going to be important when we're discussing about Vijayanagar. Let us see the further more themes. Please jot them down, okay, so that आपको एटलीस्ट कॉन्फिडेंस आए. इफ़ यू आर एबल टू प्रिपेयर इवन दिस पार्ट ऑफ द सिलेबस, यू गेट दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ ठीक है, हमने यूपीएससी के हिसाब से अच्छे से पढ़ लिया. Then regional themes, lots of regional themes are there with respect to, you can see from Sultanate, the regional theme comes with respect to Lodhis, and if we see with respect to Sher Shah Suri, so those are the regional themes that we see. So their connection with central power is often asked. Sher Shah Suri versus Mughals. These kinds of questions are always going to be asked. Factor responsible for the disintegration of Delhi Sultanate. So that regional themes becomes very, very important. Okay. Then if we see about Mughal period, Akbar remains very, very important in comparison to other rulers, even though other rulers are also being asked by UPSC. A question has come on Babur, question has come on Noor Jahan in 2023 itself.
but Akbar remains the most important personality, and you have to understand all of his policy, चाहे राजपूत पॉलिसी हो चाहे वो उनका डेक्कन पॉलिसी हो, सब कुछ अच्छे से समझना पड़ेगा. Then questions of Marathas are mostly going to be about its emergence. Emergence means its rise, or about the resistance with the Mughals. Like this time around, how the Marathas resisted the expansion of Mughals and eventually became responsible for the decline of Mughal Empire. And some specific question on Chhatrapati Shivaji himself about the talent that he possessed and how he created a Maratha Empire Savrajya from 1674 onwards. Then 18th century, mark it. This year, 4 questions were asked from 18th century. In 1 year's paper, I was completely kind of astonished कि यूपीएससी ने एकदम से क्या कर दिया. Now, if you see the number of questions in medieval India, क्वेश्चन 5 में आपको पाँच क्वेश्चन मिल जाएंगे 50 मार्कर के लिए, 10 पर ईच. देन वी आर लेफ्ट विद ओनली 9 क्वेश्चंस. क्वेश्चन 6, 7 एंड 8, सिर्फ 9 क्वेश्चन बचते हैं. तो टोटल क्वेश्चन विच कैन कम इन ए ईयर आर 14. और 14 में से आप देखो, अर्ली मिडिवल पीरियड देयर वर 2 to 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस केम फ्रॉम 18th सेंचुरी. तो 50% ऑफ द पेपर तो यहीं पे खत्म हो गया, पहला और आखिरी थीम से. And this is something which is new. I have never seen this. So the importance of 18th century may have increased for UPSC, and they may ask a lot of questions from there. And make sure you have to pick diverse theme, because एक theme नहीं है. 18th century is considered as a long century. Long century का meaning ये है, there are so many things which we can see in 18th century, like the decline of Mughals, then the rise of the regional power, then the strategies pursued by the British for the conquest of whole of India. The diverse theme which we can see here. और इसीलिए 18th century पे इस बार बहुत सारे क्वेश्चन आए with respect to Mysore, with respect to Raja Ranjit Singh and the rise of the Sikhs under his guidance. All those things were part of this. These are the general observation which I can see on the trend which we can see for medieval India. इसको अच्छे से करो. अगर इफ़ ये चीज़ें अच्छे से कर लोगे ना इतनी, तो कम से कम पेपर में बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे, एंड द क्वालिटी ऑफ आंसर्स विच विल बी एबल टू प्रोड्यूस इन द फाइनल एग्जामिनेशन हॉल, दैट विल बी स्टूपेंडस. एंड वही हमें इसी चीज़ को ध्यान रखना है कि हम अच्छे आंसर्स लिख पाएँ. देखो, सिर्फ पेपर को अटैम्प्ट करना वो काम नहीं है, ठीक है, उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता. आप पूरा पेपर करके फिर भी मार्क्स नहीं मिलेंगे यूपीएससी में. एंड दिस इज़ व्हाट वी नीड टू डू. एज अ टॉपर आई कैन ऑलवेज टेल यू कि हर टॉपिक पे महारत कोई हासिल नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है. यू विल नेवर रिमेंबर ऑल द डिटेल ऑल्सो, कि आप रट्टा मार के पूरा आंसर लिख दोगे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, आइडेंटिफाई द थीम्स, प्रिपेयर देम वेरी वेरी वेल. बाकी सिलेबस को कवर करो, लेकिन इनको इतना अच्छे से करो दैट व्हेन यू आर गोइंग टू गेट द चॉइसेस इन मिडिवल इंडिया, you can pick them up and do the best that you can. And this is, in short, is the best kind of strategy which you can pursue for history optional. चलिए अब कोशिश करते हैं इन्हीं सारे ऑब्जर्वेशन के बेस पे टॉपिक्स को पहचानते हैं. what kind of topics are being asked by UPSC. Let us see early medieval period. Okay, so just try to jot down, like, political destabilization which happened in India because of tripartite struggle between the Palas, Rashtrakutas and the Pratiharas. This is the question that they ask. What was the impact of this? Then they've asked about the trend of Tantrism. So religious theme, you can see political theme or the military theme. Then we have the religious theme. Then changing nature of caste and gender relation in the early medieval period. This is purely about the social theme that we can see. Then relationship between emergence of literature in vernacular language and formation of regional identity in early medieval period. In early medieval period, there were small principality which we were having in India. Centralization of the power, it went away. And that's why when the various scholars, they were getting patronage from their own lords, it led to the rise of multiple languages in India. That's why early medieval period can be easily linked with the current kind of setup that we have in India. In different corners of India, we have different languages, and this phase has played a very important role. Even though this phase was considered as dark age by the British, but if we see from the point of view of diversity, diversity is the main theme that we have in the early medieval period, and you have to understand this. Okay, this is the first theme which you have to understand. Various kinds of themes are coming from early medieval period. Then specifically, if we go towards feudalism, they have just asked about the proponents of Indian feudalism. You have to talk about D.D. Kosambi, R.S. Sharma, B.N. Yadav, and their various theories along with this. Direct question from their grants. So grants becomes very, very important. Stages of feudalism have been asked. Large number of land grants and its relationship with the systems of irrigation. So what can we see? That this theme is very, very important. The questions that I'm discussing, they are from 2018 to 2023.
So what we can see that in 6 years, 7 to 8 questions have come from early medieval period, and that is very very high. It means you have to prepare this. You cannot escape early medieval period because majority of his question come in the compulsory question number 5, और उसके बिना देखो मार्क्स बनेंगे नहीं. That's why don't leave it. Many time what happen when we start studying medieval India, we start from Delhi Sultanate. भाई वो अच्छा तरीका नहीं है पास होने का. पास होना है, टॉपर बनना है, तो समझो इन चीज़ों को और उसके बेसिस पे काम करना सीखो. Then let us see the next theme. If we see the next theme, sources. Okay, I've told you that less number of questions were there from 2018 onwards, but they are now expanding. Like in 2018 they asked question about Ibn Battuta, but उसके बाद questions ही नहीं है. ठीक है, this question, question number 3, Kalhana Rajatarangani, this was asked in 22. Then this year they asked 2 questions: defects in the Al-Biruni's account, Kitabul Hind, and the importance of Sufic literature as a source of history. So this is an innovative question. Even though we know about Malfuzat. Malfuzat question was asked in 2013. What was the importance of Malfuzat? Tajkira. Okay, so these are the various kinds of things which you have within Sufic literature, which provide information about history and its trends. And मैं भी चाहता हूँ यार, देखो कि आप इस चीज़ पे फोकस करो. जितना अच्छे से आप इन चीज़ों को समझ लोगे ना, इतना कम आपका हार्डवर्क होने वाला है. बिकॉज अगर हम सिर्फ मेहनत करने का सोचेंगे ना, सिविल सर्विसेज में आप 6 साल 10 साल भी मेहनत करके कर सकते हो, फिर भी ऐसी कंडीशन क्रिएट हो सकती है कि नहीं हो रहा है. एंड अगर आप अभी से ये चीज़ें समझ लोगे ना कि हाँ ऐसे प्रिपेयर करना है, दिस इज़ द राइट वे, देन जल्दी मिल जाएगा. सबसे बेस्ट यही होता है कि एक एज तक, बिकॉज देखो इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मल्टीपल थिंग्स विच अफेक्ट्स द यूपीएससी प्रिपरेशन. इट इज़ नॉट जस्ट योर स्टडीज़, एंड ऑल ऑफ अस हैव डिफरेंट रीजंस कि भाई हाँ मुझे इसने अफेक्ट किया, उस चीज़ ने अफेक्ट किया. मैं ये चाहता हूँ आप सही चीज़ को सीधा हिट करो, बुलसाई, एंड गेट फॉरवर्ड. Literature, can you see the number of questions which are coming from literature? All right, so literature written in Hindi in Mughal India. Then role of Sufi folk literature, status of Sanskrit in Mughal India, aims and impact of translation of Sanskrit during the Mughal period, different categories of Persian literature which was emerged during the Delhi Sultanate. So one thing is very very clear, both from Delhi Sultanate as well as Mughal period, even early medieval period में भी हमने क्वेश्चन देखा था on the literature. This is how literature has become a very very important theme. Don't do this thing that where you're not even remembering the name of the literature, because ये नहीं लिख सकते कि मतलब वेरी एरा वेरी हाई प्रोग्रेस, बहुत प्रोग्रेस हो गई थी, बस याद नहीं रह पा रही है, इतनी प्रोग्रेस हो गई. वो नहीं काम करना. लिटरेचर इज प्योरली अबाउट मेमोराइजेशन, and if you're not remembering 4 to 5 important text along with a little bit of 1 or 2 liners on them, marks नहीं मिलने वाले. और ये चीज़ ध्यान रखना. ठीक है, it is about literature. Then art and architecture. Art and architecture is question is going to come every year. Okay, then like the new architecture which are added to the successor sultan in the construction of tombs, very innovative question. Paintings, European impact on painting, estimate of development of painting under Mughals. Then features of European painting. Mughal architecture was syncretic in nature, means it was having the elements of both Hinduism as well as Islam. Persian tradition also became a part of it. Even Central Asian tradition was a part of it. Syncretic means having the elements of architecture of different styles, and that is what is important. These kinds of question are coming every year, और ये तो हर कोई कर सकता है. बट इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है ना कि हम हमेशा फंसे रहते हैं कि नहीं हमें यही वाली थीम करके बस अर्ली मिडेबल पीरियड करके छोड़ देंगे. डजंट वर्क लाइक दैट. लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, अगर एक क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है फ्रॉम मिडेबल इंडिया एंड सपोज 2 क्वेश्चंस आर देयर है, तो 50 में से 30 नंबर या फिर 35 नंबर डिपेंडिंग ऑन द 2 क्वेश्चंस यू कैन ईजिली गेट फ्रॉम देयर. और हमारा हमेशा ये एम होना चाहिए दैट वी शुड गेट द मैक्सिमम मार्क्स. And in art and architecture as well as in literature, if you know good content, you will always get more marks. Historiography की ऐसे कोई ज़रूरत यहाँ पे होती नहीं है. तो समझो हर छोटी छोटी चीज़ को जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. Then the art of building led to its Jani Thunder Shahjahan. They built like titans and embellished like jewelers. And basic features of Mughal tomb architecture with reference to Taj Mahal. So many questions. So many questions. 6 year 8 questions. That is very high. Very very high. It means कि average 1 से ऊपर आ रहा है. Then see establishment of Sultanate पे कितने सारे क्वेश्चन है. Battle of Tarain and Chandavar, internal strife within the Rajputs, then establishment of urban settlements in North India. So again, and the importance of the Turkish garrison with respect to the factors for the defeat of the Rajput or North Indian state. Then the question about Sultan Iltutmish, question about Iqta system. So Iqta system remains very very important. Okay, this was the most important system of the Sultanate, and it was redrafted by Iltutmish. That's why questions are coming from there.
इवन इन प्रीलिम्स क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम द एकता सिस्टम, तो दोनों जगह इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी में क्वेश्चन आ रहे हैं, न्यू क्राफ्ट प्रोडक्शन, एडवांसमेंट मेड इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, रेन ऑफ खलजीज है ना, खलजीवाइट्स रेवोल्यूशन, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द मार्केट रिफॉर्म्स एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, सो इकोनॉमिक थीम रिमेन्स इंपॉर्टेंट। इस साल भी एक आधा क्वेश्चन इससे आया है, तो आते रहते हैं क्वेश्चन। इकोनॉमिक थीम्स इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। व्हाट हैपेंस व्हेन वी स्टडी दिल्ली सल्तनत, वी फोकस ओनली ऑन द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, वी फॉरगेट अबाउट कि देयर वाज अ सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन एक्सेट्रा, लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। मज़ा नहीं आता वो सब पढ़ने में, और जो मज़ा है ना वही परेशान करता है एग्जाम में। तो ध्यान रखना, इकोनॉमी रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट थीम। Alauddin Khilji in himself is a very important personality. ओके, सो वेन एवर वी टॉक अबाउट अलाउद्दीन खिलजी तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसमें हमने एक दो और सुल्तान का भी ऐड कर दिया, इनको ब्रॉड इसलिए करके दिखाया बिकॉज ही इज़ द मोस्ट परवेजिव थिंग दैट वी फाइंड इन द एग्जाम। क्वेश्चन ऐड करने का मोल इल्तुतमिश, मार्केट रेगुलेशन, अगेन द मोटिव्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अग्रेरियन पॉलिसी, इकोनॉमिक मेजर्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड इवन अग्रेरियन रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन। सो अलाउद्दीन रिमेन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट monarch, मोस्ट इनफेमस ऑल्सो, फेमस ऑल्सो, दोनों चीज़ चलती है इनके साथ में। Okay, so please prepare Alauddin Khilji. I'm not saying you don't have to prepare other Sultan. It is important. This year question came on Balban. Okay, but Alauddin Khilji is someone उस पर हर साल क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है. That's why you cannot leave it. अदर सुल्तान्स में क्वेश्चन तुगलक नोबिलिटी पे आता है, नोबिलिटी रिमेन्स इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम तुगलक पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ नोबिलिटी इट वाज डन बाय the most, I would say, infamous sultan that we have, Muhammad bin Tughlaq or MBT, and that's why two questions have come directly on the heterogeneous nobility that was created and how it led to the decline. इस साल ये क्वेश्चन आ गया, factors which attributed for the decline of Delhi Sultanate. This question was never asked. तो दोज डायमेंशन विच आर मेंशन्ड इन आवर सिलेबस एंड नेवर बीन आस्क्ड, वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। जैसे इस बार दिल्ली सल्तनत पे आया क्वेश्चन ऑन नूर जहाँ, यूपीएससी वाज नॉट आस्किंग क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक रेगुलरली। आए अगर आया भी हो तो 10-15 साल हो चुके हैं। ऑप्शनल इज गोइंग ऑन फ्रॉम 1979, बहुत बहुत टाइम हो चुका है इस चीज़ को, ठीक है, 40 साल से ऊपर हो चुका है और मुश्किल से इन पे क्वेश्चन आते हैं। बट दीज थीम्स became important and if you go through the PYQs, because PYQ हमने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं and you can register and get the PYQs from us. Vijayanagar, you can see the debate ki what was the factor responsible in the rise of Vijayanagar, how Vijayanagar empire became cultural capital, then the foreign travelers account which gave information of Vijayanagar kingdom, Amukta Malada as a source of history. Lots of questions are coming from Vijayanagar. Vijayanagar you have to prepare very well. While understanding Vijayanagar, I am giving you an advice, also read the new NCERT, Themes in Indian History Volume 2. This NCERT book is important from optional point of view. बाकी first और third को छोड़ देना. Second is important because in medieval many questions I have seen have come from there. Even this question you see ना कि how importance of Sufi literature, okay, from the point of view of history कि क्या knowledge मिलती है, वो भी उसमें new NCERT में दिया हुआ है. That's why I always tell my student कि भाई उसको जरूर पढ़ना, तो मेरे को याद आ गया, इसको आप जरूर एक बार नोटिस कर लेना. Regional kingdom, Kashmir, General Abidin, medieval Deccan polity economy, Sher Shah, then the importance of music and the gharanas, and finally Rajput school of painting and comparison with the Mughals. तो रीजनल किंगडम्स, तो रीजनल किंगडम में जैसे कंपैरिजन कर दिया कि राजपूत पेंटिंग का बता दो विद मुगल्स के साथ में बता दो, ठीक है, जनरल अब्दीन है उसको भी आप कंपेयर कर सकते हो विद अकबर। तो दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग एवरी ईयर, थोड़ा सा इसको प्रिपेयर करो। सूफी भक्ति में हर साल एक क्वेश्चन पक्का है, ठीक है, लाइक दिस है टेनेट स्प्रेड एंड इम्पैक्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट, सीधा मूवमेंट्स सारी बता दो, ठीक है। When we talk about Bhakti movement, it starts from Tamil Nadu, then it spreads to Karnataka, then Maharashtra, then it comes to North India, and the later Bhakti saints they come from Gujarat. So this is what is important. Sufi and Bhakti thought ennobled Indian psyche, philosophy of Shankaracharya, mission of Kabir, Chishti saints and their attitude towards state, transformation of Sikh community. All of these questions they are linked to the cultural theme. So cultural theme, Bhakti, Sufi, literature, art and architecture, they are going to take an important part or they will play a very important part in your selection. तो अपने selection के लिए कम से कम थोड़ा सा सूफी बन जाओ, ठीक है, बहुत जरूरी है इनको पढ़ना. Veer Shaiva, see the different aspects of Bhakti and Sufi. They are not limiting themselves to any one single theme of Bhakti. Diverse theme. Veer Shaiva, now all of us have to remember, important from Karnataka point of view, where Vaishnava Bhakti, Vaishnava saints were in different parts of India. So, and their impact on provincial literature, how it helped. तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा ना, चैतन्य महाप्रभु के बारे में याद रखना पड़ेगा. तो बहुत सारे आपके important saints हैं. That is what you have to remember. Sufi and Bhakti remains important every year.
Mughal Akbar, you can see question on the nature of Mughal state under Akbar. We were easily able to forecast कि यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट प्रोवाइड की थी मैंने, तो ये मुझे लग रहा था इसमें आने वाला, आ गया इस बार. देन importance of the religious ideas of Akbar, okay, how he did not try to impose his ideas on people, and the overall evolution of this religious policy, and that has already been asked in 2018, and the relevant illustration between the relationship between Akbar and Rajput. So his policies remain very very important, and उसको अच्छे से कर लो. इवन शॉर्ट नोट्स भी अगर आप बनाने का सोचते हो ना, बहुत लोग पूछते हैं मुझे शॉर्ट नोट्स बना लें, शॉर्ट नोट बना लें. पूरे सिलेबस का मत बनाओ, पूरे सिलेबस का कभी काम नहीं आएगा. हमेशा पहले कोशिश करो मिनिमम, जो बहुत फेमस प्रिंसिपल है ना, पहले मिनिमम के पीछे जाओ, एंड दैट मिनिमम शुड बी क्वालिटी वाइज. ओके, वेयर द ट्रेंड एज पर द ट्रेंड, एंड दोज एरियाज विच आर रेगुलर विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी पे, पहले उस पर फोकस करो. अगर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जाओगे ना, ऐसे प्रिपरेशन करनी है पूरे सिलेबस की, उससे नहीं होता, उससे मार्क्स नहीं आएंगे कभी भी. Then we see Mughal economy, questions on were there any kind of clues to see that capitalism could have survived or it could have become prominent in India in 18th century or 17th century for that say. But इसके ऊपर बहुत बड़ी debate है. Then do we see that the trade and commerce in Mughal empire brought about integration of Indian subcontinent? जीएसटी न्यूज में चल रहा 2016-17 से, है ना, कि मतलब हाँ, इट इज गोइंग टू टेक इनटू कंसिडरेशन. देन इट बिकेम पार्ट ऑफ द इंडियन लॉ. इनडायरेक्ट टैक्सेशन वाज गिवन अ मेजर ओवरहोल एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, एंड इवेंचुअली व्हाट डू वी सी, यूपीएससी ने वही वाली थीम गूगल्स पे चिपका दी. कभी कभार करंट अफेयर्स भी जब पढ़ रहे होते हैं तो पता होना चाहिए कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केट, and to what extent this could have been ensured by the Mughals during their own times. What were the limitations that you can think of? Even though these kinds of questions are very very difficult, and I always advise that you should not attempt these questions, because making answer on the spot, it becomes very very difficult. Okay, but still now we have the benefit of the hindsight. हम बैठ के एटलीस्ट समझ सकते हैं कि ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चन भी यूपीएससी में आते हैं, एंड ये भी बहुत जानना बहुत जरूरी है. लाइक जो सचिन तेंदुलकर भी है ना, ही ऑल्सो न्यू कि विच बॉल ही हैड टू लीव. ये वैसे क्वेश्चन, इवन दो पढ़ के हमें रेडी रहना चाहिए कि अगर ये पर उसमें आ जाए अपना कंपलसरी में, तो हमें उसको करना पड़ेगा. बट इफ इट कम्स इन द चॉइसेस, so you should always know these are the kind of question where writing answer is not going to be a cakewalk. It's going to be relatively on the difficult side, and these are the question which we can. Institution, so question हमारा जागीरदारी मनसबदारी, question comes on जागीरदारी crisis. Satish Chandra has given that specific as a study. Then nature of mansabdari system during reign of Akbar, again the working of zamindari system. So institutions always will be important, please remember it. Okay, from the point of view of Delhi Sultanate, from the point of view of Mughals, see the number of questions, it's always going to be important. Then other Mughal personalities, like question this year on Noor Jahan, Babar पे question आया था, Aurangzeb, Akbar and Aurangzeb, these two are the most important personality if I'll say from the Mughals, and among these two also Akbar is more important from exam point of view. So question इनके ऊपर भी एक एक theme पे आता है. Marathas, how they were a threat to the integrity of Mughal empire, account for the rise. There's a debate with respect to what were the factors responsible for the rise of Marathas. Shivaji, his military, how he was a military conqueror, not, and also an enlightened ruler, and the sources for understanding the history of Chhatrapati Shivaji. So this is what we need to understand, that Marathas will always remain important for our exam. If I see the 18th century, see the number of questions, again a very very important theme. If I see from exam point of view, अगर मुझे अभी फिर से एग्ज़ाम देना पड़ता तो मैं क्या चीज़ें ध्यान में रखता. कुछ चीज़ें तो मैंने भी 3-4 साल में फेल हो गई सीखी हैं, ठीक है, तीसरे अटेम्प्ट में पास हुआ था. तो अभी मैं अगर कोई मेरे को समझा देता ना ऐसे पहली बार में कि ऐसे 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 पढ़ लो, दिस वुड हैव बीन अ ग्रेट हेल्प. लाइक सी दिस ईयर economic debate on 18th century, okay, dark age versus the age of you can say flourishing trade. Hyder Ali and the signature comment ki he was born to create an empire, Tipu to lose one. Afghan invasion in 18th century, how it led to the decline of Mughals. Then court intrigues of 18th century, then 18th century with reference to culture and economy. This question has repeated in 23 economy. Okay, how far justified to consider the sources states like Bengal, Awadh and Hyderabad, they were successor state. The rise of Sikhs under Ranjit Singh. So many questions are coming from 18th century. In question number 8, mostly ये होता ही होता है. But this time around, the whole question number 7 in 23, it was directly from the 18th century. तो अगर किसी ने छोड़ा होगा, तो it would have been very difficult to attempt the question in medieval India.
दैट्स वाई मैं आपको यही समझा रहा हूँ ना बार बार कि कोशिश करो चीज़ों को पकड़ने की। स्टॉक मार्केट की तरह चलता है यूपीएससी भी कि हाँ ये आज 4 क्वेश्चन यहाँ से डाल देते हैं, दो अगले 2-3 साल फिर थोड़ा चेंज कर देंगे, फिर थोड़ा चेंज करते रहेंगे। द ट्रेंड बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग द ट्रेंड ऑल्सो एंड देन द टॉपिक वाइज एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यू ऑल्सो। And I hope you can learn a lot from this. Make sure you get the best out of this. This is something which I want to do for all of us. ठीक है, तो दिस इज हाउ आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट थ्रू दिस 7 डे मास्टर क्लास। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इफ़ यू वांट ऑल दिस इंपॉर्टेंट पीपीटीज डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए बस आप रजिस्टर कर सकते हो। साथ ही साथ सारे वीडियोस देखना भाई, एक वीडियो देख के मत छोड़ देना। दिस हैज़ बीन द टेंडेंसी है ना, पूरी जो लाइफ है ना अभी जो करंट, इट हैज़ बिकम अटेंशन डेफिसिट जो है ना, इट हैज़ बिकम अ की थिंग। एंड दैट्स वाई जब अटेंशन नहीं होती, बाद में फिर हार्डवर्क करोगे, फिर वापस से फेल होगे, फिर दिक्कत आएगी। सारा एक साथ करो। मैं आपकी स्ट्रेटजी रिलीज कर चुका हूँ मैं, ठीक है। देन पेपर 1 का फिनिश हो गया, इसके साथ में ट्रेंड एंशिएंट एज वेल एज मिडिएवल, मॉडर्न और वर्ल्ड का भी साथ में भी आने वाला है। थोड़े दिन में आपको मिल जाएगा वो भी। मास्टर क्लासेस के 4 सेशन अलग से आएंगे कि भाई कैसे पढ़ना कैसे चाहिए। अभी तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि व्हाट यू शुड स्टडी स्पेसिफिकली। हाउ टू स्टडी ऑल्सो बिकम्स वेरी वेरी रेलिवेंट सिलेबस के हिसाब से। तो वो भी 4 सेशन आपके आएंगे। तो रजिस्टर करो, इन अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट्स को आप डाउनलोड करो, ठीक है। रजिस्टर एंड इंश्योर कि आप काउंसलर के साथ में एक अच्छा सेशन कर सकें। ऐसा रिजल्ट प्रोड्यूस करो ना यार, मेक योर लाइफ वंडरफुल। Okay, even I did not know when I was started preparation for in 2013 how my life would be after 10 years. और जो मैं आज हूँ, I am proud of that. Okay, and this is what you need to do. जब हम start करते हैं, we never know कि how our life is going to get transformed. I was not the only one whose life got transformed. Every year there will be 1,000 people. I am one of them. Not like I have done something very very special. Try to understand at this age of 23, 24, 25, when you get selected, this gives you a lot of potential. आपकी लाइफ की जितनी भी ह्यूमन पोटेंशियल है, यू कैन हार्नेस दैट। एंड ये सीढ़ी है उसकी तरह, ठीक है। तो मेक श्योर इन लोगों की तरह आप भी अच्छी रैंक करो, ऐसे मार्क्स लेके आओ, बिकॉज मार्क्स इज समथिंग। आप पढ़ो, पढ़ाई करो, लेकिन लास्ट में मार्क्स भी अचीव करने हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आंसर राइटिंग, इफ यू आर एट अ बिगिनर लेवल, आई वुड recommend that you go for daily answer writing. But this daily answer writing, it should be evaluated, and उसका आपको कुछ एक वीडियो डिस्कशन मिलना चाहिए जो हमारे यहाँ डॉन कोर्स में होता है, ठीक है। इफ़ यू हैव ऑलरेडी डन दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस विद PYQs, then I would recommend that you go for टेस्ट सीरीज। कंटेंट में प्रॉब्लम है, अच्छी जगह से फाउंडेशन नहीं किया, बिकॉज वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। बिकॉज अगर ढंग से फाउंडेशन नहीं होता तो हम बार बार कंटेंट में मार खा रहे हैं। फॉर दैट पर्पस यू कैन थिंक अबाउट संपूर्ण क्रांति। दैट इज वन ऑफ द कोर्स इन विच आई स्पेसिफिकली टेक दोज एरिया विच आर गोइंग टू मैटर, नॉट दोज एरिया जो फन के लिए क्लास में पढ़ाते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 की कहानी सुना दो। कहानी सुनाने का मन नहीं करता मेरा, ठीक है। उसके लिए बहुत लोग हैं यूट्यूब पे, कहानी सुना सुना के उससे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा फाइनल एग्जाम के ऊपर। कहानी सुनाने का थोड़ा फ़ायदा शायद कभी इंटरव्यू में मिल सकता है, नॉट इन द मेंस एग्जामिनेशन। सो माय फोकस इज ऑलवेज ऑन व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द फाइनल एग्जाम, एंड दैट इज द कोर्स विच इज नोन एज संपूर्ण क्रांति, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग, विच इंक्लूड्स मैपिंग ऑल्सो, बिकॉज मैपिंग मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का दिक्कत रहता है, ठीक है। इट विच इंक्लूड्स टेस्ट सीरीज ऑल्सो, विच इंक्लूड्स specific classes which are going to mentor you for the score like 300. Okay, and if you're at a beginner level ki bilkul start hi kar rahe ho, you're just starting the preparation, so best would be for you for the foundation course itself. Within the foundation course we give you everything, map, notes, test series भी होता है, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं at the basic level. Then संपूर्ण क्रांति test series, then डेली आंसर राइटिंग और डॉन सवेरा। ज़िंदगी में सवेरा तो आना चाहिए कभी ना कभी। मैपिंग प्रोग्राम इज़ देयर बिकॉज प्रीवियसली इट यूज टू बी वेरी डिफिकल्ट टू द मैपिंग। आई माई सेल्फ टुक 2 to 3 years जिससे अच्छे नोट बना पाया, एंड फिर उसको मल्टीपल रिविजन करते 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 अब उसकी एक और फिर से एक और रिविजन की जा रही है, बिकॉज लास्ट ईयर UPSC प्लेड विद अस, ठीक है। एंड फाइनली हिस्ट्री ऑप्शनल आंसर राइटिंग एंड नॉलेज सीरीज, जिसमें वी आर गोइंग टू टीच यू हाउ टू राइट आंसर, हाउ टू रेप्लिकेट द टॉपर्स, कि टॉपर्स ऐसा क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं उसमें मॉडल आंसर पे फोकस नहीं कर रहा, बिकॉज देखो मॉडल आंसर बनाना तो हमारे लिए आसान है, बट मॉडल आंसर्स का एक बड़ा लिमिटेशन फ्रॉम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू इज द वर्ड लिमिट। रियल टाइम एग्जाम में कैसे करना होता, तो वो सारी चीज़ें हैं। उसी के लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया था, हाउ टू यूज़ डायग्राम्स इन द एग्जाम हॉल, ठीक है। तो एक डायग्राम वाला वीडियो जरूर देखो, यू विल अंडरस्टैंड, एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द हॉक सीरीज, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर। और एक चीज़ का ध्यान रखो, द मोर ट्रूथफुल you are with yourself, okay, the better the results are going to be.
एंड दिस इज़ व्हाट आई एम ऑल्सो ट्राइंग। भैया हिस्ट्री ऑप्शनल में कोई भी किसी तरह की कमी ना रह जाए, एंड दिस इज समथिंग विच आई एम डूइंग फ्रॉम लास्ट मोर देन अ डेकेड। अब तो मेरी लाइफ में भी डेकेड वर्ड आ गया है, ठीक है, बट अ डेकेड ऑफ आई वुड से lots of achievements and finally lots of satisfaction because my students are also performing results even better than me. Rank 1 आ गया, उसके बाद there's nothing that you can think about कि if your students are getting the rank 1, अर्जुन मिल चुका है आपको लाइफ में, ठीक है, and it is going to happen every time because effort is required from both side. It is not like that once the result come कहानी खत्म हो गई. It's going to happen time and again. So if you are ready for right kind of preparation, then you can always think about joining prep career. ठीक है, all the very best and take care.